So, today we will enjoy and learn the story An Astrologer's Day written by R.K. Narayan. So, before starting the test, we will have a glance at the story's theme. See, a man leaves his village with an anxiety. Anxiety means chinta. He turns into an astrologer. वो एस्ट्रोलॉजर के रूप में डिस्गाइज कर लेता है इन ए डिस्टेंस टाउन, दूसरे शहर में, दूर के. वन इवनिंग अ कस्टमर कम्स, एक शाम को कस्टमर आता है. कंसल्ट्स हिम, उस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करता है. एंड द एस्ट्रोलॉजर गेट्स रिड ऑफ हिज एंग्जाइटी, और एस्ट्रोलॉजर अपनी एंग्जाइटी से गेट रिड मीन्स छुटकारा पा लेता है. व्हाट वाज द एंग्जाइटी, उस एस्ट्रोलॉजर की एंग्जाइटी क्या थी. हाउ डिड ही गेट रिड ऑफ हिम, वो उससे कैसे छुटकारा पाता है. व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ. नो बिफोर स्टार्टिंग द टेक्स्ट and understanding the real story, we will have a look on the difficult words. See, punctually, at the right time or in time, professional equipment, things used in business, consisted of, to be comprised of, मिल के बनी है. shells, hard covering of anything. obscure, mystic charts. obscure means not clear. Obscure mystic charts means the charts having hidden meanings that cannot be understood easily. On Palmyra writing, something written on Palmyra leaves. Palmyra एक ट्री होता है, उसकी लीव्स पे sometimes the astrologers used to write mystic writings to befool the customers. That is a Palmyra writing. Resplendent means bright. Ancestral home means the house belonging to one's forefathers. Forefathers means पूर्वज. Tangles. Tangles means complications या problems. Tangles of life, complications of life. Human ties means human relations. Perception means observation या वर्क एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं. ऑब्जर्वेशन या वर्क एक्सपीरियंस इज कॉल्ड परसेप्शन. स्टफ मैटर. वेल डिस्पोज्ड मीन्स परफॉर्म्ड फ्रेंडली एंड हेल्पफुली. वेल डिस्पोज्ड मीन्स परफॉर्म्ड फ्रेंडली एंड हेल्पफुली. गेजिंग मीन्स लुकिंग. impetuous means impulsive. Impulsive. Forbidding means severe या मना करना. forbid means मना करना भी होता है. severe. blew out means extinguished the fire, यानी आग को बुझा देना. blew out. flare means to glitter or burn with a bright unsteady flames. चमकना या कुछ फ्लेम यानी ज्वाला के रूप में जलाना. नेक्स्ट है फ्लेयर मीन्स टू ग्लिटर या चमकना. शाफ्ट मीन्स अ स्लेंडर
pole or stem. Shaft means a cylinder, pole or stem. Pole means एक rod होता है, rod. Straight, wandered without aim, that is called straight. It means he straight here and there. Blotted out, stained. Blot means धब्बा लगना या stained. Careworn means worried. Picked means insulted or provoked. Picked means insulted or provoked. Tilting means sloping position, inclined यानी झुका हुआ. Tilting means यूं तिरछा सा झुका होना. Flung means rushed violently or threw on the ground. Flung तेजी से दौड़ना या ग्राउंड पे फेंक देना. That is called flung. Bluffing means cheating. Argument, reasoning. Bluffing, cheating. Argument, reasoning. Cheroot, cigar. Pause, stop. Ruthlessly, cruelly. Jatka, tonga. Jatka, as in modern times autos or cars, in the olden times jatkas or tongas were used for going from here to there. Swore, took an oath. Shapat lena. Bobble, confusing word or sound, that is bobble. See again. Babble. Babble means confusing word or sound. B-A-B-B-L-E. Babble. Disgorge, throw up, फेंक देना. We should disgorge the rubbish. Disgorge. Incantations. Incantations, words expressing magic, producing magical effect. Incantation means मंत्रोच्चारण हिंदी में कह सकते हैं. Convincing means assuring firmly, assure करना, आश्वासन देना. A good deal of haggling. Haggling means bargaining या मोल भाव करना. Overwhelmed, affected, weighed down, submerged. Overwhelmed means affected या weighed down या भाव विभोर होना. Enthusiasm, ardent zeal means उत्साह. Clenching, closing tightly. He clenched his fist. He clenched his fist. उसने मुट्ठी बंद की. Scared, sacred ash. Holy ash यानी पवित्र राख. Vermilion, red powder with brightness. Vermilion color, red powder with brightness. Sparkled means shone, चमका. Client, customers. Prophetic, गॉडली या डिवाइन, ईश्वर की तरह, ईश्वरीय. प्रॉफिटिक या मीन्स भविष्यवाणी भी कह सकते हैं. फोरटेलिंग या गॉडली या डिवाइन. टू क्राउन द इफेक्ट, टू प्रोड्यूस मोर इम्प्रेशन यानी अधिक इम्प्रेशन बढ़ाना. फेल्ट कंफर्टेड, फेल्ट रिलीव्ड. टू क्राउन द इफेक्ट मीन्स टू प्रोड्यूस मोर इम्प्रेशन. C. Considerably sufficient, wound from wind. Tried or moved something round and round. कुछ round and round move करना. Saffron, orange powder, केसरिया. A half-wit's eye, a person having very poor intelligence. Half-wit's eye means एक person जिसकी बहुत इंटेलिजेंस कम हो यानी बुद्धि कम हो. Next, cosmos means a garden where flowers of white and pink colors are grown. एक गार्डन जहाँ पे फ्लावर्स ऑफ वाइट एंड पिंक ब्लूम. नेक्स्ट, स्टॉक्स.
स्टेम्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टेम्स, टहनियाँ. बोज, ब्रांचेस. A surging crowd, a number of people moving forward, आगे बढ़ती हुई भीड़. Occupations, business. Created enough din, made a lot noise. Created enough din, din means noise, made a lot noise. Vociferousness means producing loud noise. Both words are nearly same. Created enough din, made a lot noise. Vociferousness, producing loud noise. Loud noise, vociferousness, lot of noise, created enough din. Fright, roasted or cooked. Flocked, came into a group. Transacted means carried on, आगे ले गया. Flare, open flare. Open flame, flare means open flame यानी खुली ज्वाला. Crackled, a sound caused by burning the sticks. लकड़ियों के जलने की जो आवाज़ होती है, that is called crackled. स्टिक्स जब जलती हैं तो जो साउंड होती है, that is called crackled. Enchantment, magic. Stuck on, fastened on. Bewildering, confusing. Criss-cross, network of cross lines. See here, cross lines. Criss-cross, network of cross lines. Astonished means surprised. Shoot, cunning. Tilling the land, working on the land. भूमि पे काम करना. Till means जुताई है. Plowing the land, plow means खेत जोतना. Deserved, able. The wages, income. Vendor, seller. Sucking, smoking. He was sucking cigarette. Groaned, moaned या विलाप करना. Made sound expressing grief, that is called groaned. कराहना. Reflectively, seriously. Choke out, suffocate. To block up. घुटना, दम घुटना. Regretfully, with sadness. Escaped, got clear away. दूर हो जाना, बच के निकलना. Crushed under, crumbled. Gratified, satisfied. Green shaft, beam या किरण. ग्रीन बीम ऑफ लाइट यानी लाइट की हरी किरण. ग्रीन बीम, हरी किरण ऑफ लाइट. स्वाइन, एन अब्यूज. स्वाइन इज an animal. It is generally used for abuse. Swine and abuse. Midday, noon. Overjoyed, greatly happy. And jaggery means coarse sugar, गुड़. That jaggery means coarse sugar या गुड़ जिसे बोलते हैं. Piole, see piole, bed. Gasped, caught breath with open mouth. Caught breath with open mouth. Gasped, caught breath with open mouth. मुंह खोल के सांस लेना या रोकना. Yawning, opening the mouth with wide open. Yawning, opening the mouth with wide open. जम्हाई लेना जिसे बोलते हैं. मुंह खोल के वाइड, मुंह को वाइड ओपन करो और ब्रीदिंग, दैट इज कॉल्ड yawning. एंड गैस मीन्स caught breath with open mouth. मुंह खोल के एकदम सांस रोक लेना, दैट इज कॉल्ड gasped. He was gasped. He was yawning, opening the mouth with wide open.